Hello everyone. Good morning dear students. I am Sonal Rajput and I will teach you English and English grammar. Coming to a new class, seeing a new textbooks, you must have some curious, some eagerness and some excitements in your mind. Today I will going to teach you 3 questions. This is a very wonderful story. Please concentrate here. I will read this lesson one by one and explain you. A king once thought that he would never fail if he knew 3 things. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. It was a king. He wanted to rule his kingdom very well. बच्चों ध्यान देना, एक राजा था, वो अपने किंगडम में अच्छे से रूल करना चाहता था. So once in his mind, 3 questions are raised and he wanted the answers of those 3 questions. These 3 questions, these 3 things were: what is the right time to begin something? This is the first question. Which people should he listen to? This one is second. And what is the most important things for him to do? So, dear students, these are 3 questions that the king had raised in his mind. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. राजा ये 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहते थे. सो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने अपने मैसेंजर को अपने किंगडम में भेज दिया, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. And the king promised to those person who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. सबने अलग अलग तरह से उनका आंसर दिया. In reply to the first question, तो बच्चों ये आंसर थे in reply to the first question. फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या आंसर आया? Some said the king must prepare a timetable. किसी ने बोला कि किंग को यानी कि राजा को पहले से एक अच्छा टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. टाइम टेबल प्रिपेयर करके राजा को वो फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and the king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. किसी ने बोला कि जो राजा है उनको एक काउंसिल चाहिए कि जो राजा को प्रॉपर टाइम पे हेल्प कर सके. बच्चों काउंसिल मीन्स क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल? काउंसिल इज अ ग्रुप ऑफ chosen to give advice or to make rules. This is the meaning of council. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. तो
किसी ने बोला कि कभी कभी कोई ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें अर्जेंटली ऑन द स्पॉट हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है. सो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स because it seems it demands some time, it takes some times. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. In their answer to the second question, some says that the people most necessary to the king were his counselors. हमने आगे देखा था. I just have discussed you on the first page. What was the king's second question? The second question was which people should he listen to? So the answer of that question, that some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors. And yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. बच्चों अभी अभी हमने देखा कि राजा को 3 क्वेश्चंस रोज हुए थे उनके माइंड में. सो वी जस्ट सो द आंसर्स ऑफ 2 क्वेश्चंस. नाउ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. सो to the answer of this question were also different. The king, some said science, some others choose fighting. किसी ने बोला कि राजा को टेक्नोलॉजी से काम लेना चाहिए. अदर्स चूज फाइटिंग, किसी ने बोला कि राजा को फाइट करना चाहिए. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. तो किसी ने सजेशन किया कि राजा को पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए. सो we are seeing that all the answers are very different. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. तो राजा को सेटिस्फाई नहीं हुआ. सो उन्होंने क्या किया? तो he gave no reward. उन्होंने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट. और उन्होंने डिसाइड किया, राजा ने डिसाइड किया कि अब उनको कोई हर्मिट की हेल्प लेनी चाहिए. बच्चों आप जानते हो हर्मिट का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ हर्मिट इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन. एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता हो एंड लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, और बहुत सिंपल लाइफ जीता हो. सो राजा ने डिसाइड किया था, किंग डिसाइडेड टू गो टू सर्टेन हर्मिट who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. और hermit कहाँ में रहता था? wood में रहता था. Here, what is the meaning of wood? Wood means a small forest. So the hermit lived in a wood. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes. तो राजा ने क्या किया? उन्होंने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए, कॉमन क्लोथ्स जैसे कि हम लोग पहनते हैं. सो ही वॉर ऑर्डिनरी क्लोथ्स एंड बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड. फिर राजा ने क्या किया? तो उन्होंने अपना हॉर्स बॉडीगार्ड के साथ हर्मिट की हट से थोड़े दूर खड़ा कर दिया. एंड वेंट ऑन एलोन. और राजा अकेले ही हर्मिट के पास गए. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट. अब जैसे ही जो राजा है वो हर्मिट की हट की क्लोज जाता है. हट यानी हम बोल सकते हैं उसको झोपड़ी. तो राजा जैसे ही हर्मिट के हट के क्लोज जाते हैं, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. तो राजा ने क्या देखा कि हर्मिट है वो क्या कर रहा था? वो डिग कर रहा था ग्राउंड. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग.
फिर हर्मिट ने क्या किया, राजा को देख के राजा को ग्रीट किया। जैसे कि हम हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको वेलकम देते हैं, वेलकम करते हैं, वैसे ही ग्रीट मीन्स वेलकम। सो द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। फिर उसने अपना काम कंटिन्यू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। सो द किंग, सो क्या देखा राजा ने कि हर्मिट जो है वो ओल्ड और वीक हो गया था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली। और जैसे जैसे वो काम करता था वो अपनी सांस जल्दी जल्दी लेता था। सो द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, now the remaining lesson we will do and I will explain you in our next class. I hope you will understood it, and please read twice at your home, and if you have any query regarding this lesson, this part, you can call me anytime, anywhere. Thank you.